Very small topic, very easy to answer. Everything is straightforward. ठीक है, छोटा सा बोन है, क्यूट सा बोन है, easy to remember also. ठीक है, अभी ग्रुप का नाम है, देखोगे ऐसे कि ग्रुप फॉर सबक्लेवियन वेन. ऑब्वियसली अगर पूछे कि इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली सबक्लेवियन वेन ही जाएगा इसमें. ग्रुप फॉर सबक्लेवियन आर्टरी, दैट मीन्स वहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी ही जाएगा. वेरी इजी टू आंसर. ठीक है, तो रिब में से सबसे पहले ये वाला पढ़ना ही है, फास्ट रिब. ठीक है, फर्स्ट फ्यू थिंग वी विल डिस्कस, देन आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर फास्ट रिब. दिस इज योर फास्ट रिब. मेक ए फ्री हैंड डायग्राम ऑफ दिस वन, देन यू विल बी एबल टू correlate. Okay, nothing significant in the inferior surface. आपको ऊपर वाला हिस्सा you have to remember. Okay, first of all draw this picture. See, this one is, what do you think, this one is anterior portion or this one is anterior? This one is anterior end, and this one is, so head is in the posterior side. Head is in the posterior side, and after head there is neck. Obviously neck is, how does it look like? Our neck, this is a constriction, right? Narrow place. Obviously after the head, that is the neck region. After that this is tubercle, and this is the shaft area, right? Shaft. बाकी this one is shaft. ये वाला कौन सा हिस्सा है? Anterior end. Anterior end articulates with the, connects with the which region? What do you think? Costal cartilage. Costal cartilage, right? And the head portion, this one articulates with the vertebra. Direct spinal cord के साथ अगर कोई स्ट्रक्चर लगेगा, that patient won't be able to even walk. ठीक है, अगर स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा भी कंप्रेशन हुआ तो ये हिल भी नहीं पाएगा इंसान. There is vertebra, that is fast thoracic vertebra. इसके ठीक है. Now these two things. First one is there is a groove. There is a groove. Groove for subclavian artery. Which structure is present there? Obviously subclavian artery. Very easy to remember. And after that, this is the groove for subclavian vein. Then which structure? Subclavian vein. Between these two grooves, there is a structure. That is the scalene tubercle. This is also important. नाम क्या है इसका? Scalene tubercle. Which muscle is attached here? Scalenus anterior. Scalenus anterior कहाँ पर लगता है? Scalene tubercle पे. Very easy, right? Then comes, okay, this bone has two borders. Obviously, this one is the inner border, अंदर की तरफ है. This one is outer border. कैसे होगा outer border रहेगा? Laterally. Inner border medially होगा, right? And this one is upper surface, superior surface. और नीचे का हिस्सा होगा inferior surface. Now, if this is your bone, if this is your fast rib, which one is what part is this? Head. This one? Neck. This one? Tubercle, right? This one is anterior end, connected with the costal cartilage. Head portion, this one, this facet, this one, yes, vertebra, right? Now if you assume this is the groove for subclavian artery. First one is, this one is closer to the head, this one is for artery, that is groove for subclavian artery. उसके बाद आएगा groove for subclavian vein. In between these two there are scalene tubercle. And which structure is attached here? Scalenus anterior. Scalenus anterior, right? Now start writing. Introduction. बहुत कुछ लिखा होगा, पहले सुन लो. I have already explained. The fast rib can be distinguished by its
स्मॉल साइज ऑब्वियसली, बाकी रिब में से सबसे छोटा वाला होगा ये वाला ही, दिस वन, राइट। एंड द फैक्ट दैट इट्स शाफ्ट इज ब्रॉड, शाफ्ट रीजन ब्रॉड है, राइट, देखते में पता चलता है। ये वाला छोटा नैरोअर है, दिस वन इज ब्रॉड, राइट। एंड हैविंग कौन सा सरफेस है, मैंने बोला ना अपर सरफेस एंड, yes, that is upper surface and lower, that is superior surface and inferior surface. How many borders? Inner border, outer border, right? See, having upper and lower surface, inner and outer border. The head has a single facet. This one articulates with the first thoracic vertebra. I have already explained, right? लिखो ये, the head has a single facet. And this one articulates with the first thoracic vertebra, right? The upper surface of the shaft has, the upper surface of the shaft has two shallow but wide grooves for, इसके लिए है two groups for subclavian artery and subclavian vein, right? The upper surface of the shaft has two shallow but wide grooves for the subclavian artery and vein. In between these two groups there is a structure known as, there is a, yes, tubercle, that is scalene tubercle, ठीक है। Unlike clavicle, अच्छा वो वाला पॉइंट छोड़ दो, बस ये वाला लिखो। The lower surface of the rib, कैसे अपर सरफेस और लोअर सरफेस आइडेंटिफाई करना है? Lower surface will be smooth, lower surface will be smooth और upper surface will be rough, ठीक है। Lower surface will be smooth. तो क्या क्या लिखा हुआ है? The first rib can be distinguished by its small size, by the fact that its shaft is broad and flat, having upper and lower surface and inner and outer borders, ठीक है। The head has a single facet and this one articulates with the first thoracic vertebra, first thoracic vertebra. This one you have to know. अगर एग्जाम पे रिब देता है तो ये वाला ही, I will prefer to choose this one, ठीक है। इसमें से कोई टफ सवाल पूछना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सब कुछ नाम में ही है, ठीक है। Near the inner border of the rib there are these two groups are separated by a prominence known as the scalene tubercle, ठीक है। The lower surface of the rib is smooth and does not have a costal group. Costal group क्यों? Costal group में किसके साथ क्या हो रहता है, क्या रहता है? वो तो है, बट स्ट्रक्चर्स होता है ना, इंटरकोस्टल नर्व्स एंड ऑल, ठीक है। बट यहाँ पर देयर इज नो कोस्टल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वन, हैव यू मेड दिस पिक्चर? अगर ये वाला बनाओगे, अगर किसी के पास बोन है, बोन लेके सब कुछ पता चल जाएगा, डिट्टो होगा बोन पे, ठीक है। बाकी अगर बोन में शायद पता भी ना चले, पर इसमें पता होगा, समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। फीचर, लास्ट लाइन किसका? अच्छा लिखो, डज नॉट हैव ए कोस्टल ग्रुप, डज नॉट हैव ए कोस्टल ग्रुप। फीचर मैंने अभी तक ऑलरेडी बता चुका हूं, स्मॉल बोन है, वाइड है, ठीक है। यूजुअली अदर बोन्स में क्या होता है, शाफ्ट के यहाँ पर देयर इज ए कर्व, पता चलेगा बाकी रिब जब पढ़ोगे अदर रिब्स में, पर इसमें कोई ऐसा कर्व नहीं है, ठीक है। बाकी रिब देखोगे तो फिर पता चलेगा। लिखो फीचर्स, दिस वन इज द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट कर्व्ड। इस कर्व की नहीं बात कर रहा हूं मैं, ट्विस्ट की बात कर रहा हूं। देयर इज ए ट्विस्ट, ठीक है, इन अदर रिब्स, बट इसमें नहीं है। अगर जब बाकी रिब्स पढ़ाएंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है। दिस वन इज शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट कर्व्ड, ऐसे तो कर्व है ही, राइट। दिस वन इज शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट कर्व्ड, ठीक है। ब्रॉड एंड फ्लैट, ये सबको पता है, बेसिक ब्रॉड है, राइट। दिस वन इज फ्लैट। ट्विस्ट इन द शाफ्ट इज एब्सेंट, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। शाफ्ट में बाकी कुछ रिब्स में एक ट्विस्ट होगा, बाकी रिब जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, और इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, देयर इज नो ट्विस्ट इन द शाफ्ट रीजन, राइट। कोस्टल ग्रूव इज एब्सेंट, कोस्टल ग्रूव इज एब्सेंट। डन?
Coastal groove is absent. Side determination. Side determination. अभी पता चलेगा ना. अब देखो इस तरफ देखो. Posteriorly कौन सा हिस्सा होगा? Which one is the posterior end? Head जहाँ पर है, that is the posterior end. And anterior end is the this one broad area, right? This broad area. This one is present anteriorly and connected with the costal cartilage, right? And the scalene tubercle that is situated in the inner border or outer border? Inner border. बताएगा ना? This one is the inner border, right? And this one is the outer border. Scalene tubercle is present in the inner border, right? That's how you have to identify the side. लिखो posteriorly, that is the vertebral end or head. Superiorly मैंने बताया ना, superior surface is rough surface, inferior surface is smooth surface. Medial border has, your inner border has scalene tubercle. फिर से बता रहा हूँ, which muscle? Scalenus anterior. When the rib is placed on a horizontal plane, मतलब horizontal plane यहाँ पर होगा, किसी किताब के ऊपर रखना है, ठीक है? Then how to place it? Superior surface facing the, obviously superior surface ऊपर की तरफ ही होगा, right? Both ends of the rib touches the surface. Both ends of the ribs touches the surface. So I just ऐसा रखना है, ठीक है? Look at me. Both ends touch the surface. Whenever you place the bone on a horizontal surface, plane surface, how? Superior surface first facing upward. Obviously superior ऊपर की तरफ होगा. Then both the ends will touch the surface. ठीक है? Then posterior end is कैसे पकड़ना है? First of all, this one inner border है. This is the head end, that is the posterior end. This one is the anterior end. ठीक है? Inner border कैसे होगा? Inner border will be in the medial side. Outer border is in the lateral side. So this is of the left side, right? This is of the left side. अभी उसको कैसे place करना है anatomical position में? The shaft area will make an angle of 45 degree with the किसके साथ? Vertebral end के साथ या फिर head के end के साथ. तो you have to hold it like this. ठीक है? Just make an angle of 45 degree. ऐसे नहीं कि किताब जाके 45 degree measure करना है. Just you have to tell. ठीक है? So लिखो posterior end or vertebral end is raised so that the shaft makes an angle of 45 degree with the horizontal. Obviously पता है बोन का यहाँ पर अगर फर्स्ट रिब है, फर्स्ट रिब के नीचे का रीजन क्या होगा? इंफीरियर सर्फेस रिलेटेड टू लंग्स. नीचे लंग्स होता है ना, लंग्स एंड प्लूरा, राइट? नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. बट द मसल्स पढ़ो. द स्केलेनस मीडियस इज इंसर्टेड इनटू ए large rough area on the superior surface behind the groove for the subclavian artery. अभी देखो, if this one is the groove for the subclavian artery, बताया ना, head end के पास है groove for subclavian artery, then there is the groove for subclavian vein. इसके पीछे large area लेके कौन सा मसल अटैच है? Scalenus medius. This is what is written here. The scalenus medius is inserted into a large rough area on the superior surface behind the groove for subclavian artery. Behind the groove for, if this is the groove for subclavian artery, इसके पीछे की तरफ होगा, ठीक है? पीछे की तरफ होगा, right? This one यहाँ पर होगा scalenus medius. Then the scalenus anterior is inserted into the, पहले भी बताया कहाँ पर होता है? Scalenus anterior is inserted in the scalene tubercle and the adjoining part of the upper surface of the rib. ठीक है? कहाँ पर है? Scalene tubercle is present between the groove for subclavian vein and artery. तो वहाँ पर कौन सा मसल होगा? Scalenus anterior. Then
The subclavius arises from the anterior end of the upper surface of the rib and from the adjoining part of the first costal cartilage. मतलब anterior end of the upper surface of the rib. Upper surface कौन सा वाला है? This one is the upper surface, right? और anterior end is this one. Anterior end is this one. Upper surface, anterior end. This is the muscle subclavius. Look at this one. This is the muscle subclavius. ठीक है? This is the muscle subclavius. Then serratus anterior arises from the outer border of the rib near the groove for subclavian artery. Near the groove for subclavian artery. This is the serratus anterior muscle related to the groove for subclavian artery. किसके साथ है? Groove for subclavian artery के साथ serratus anterior muscle. Right? Then the outer space also keeps attached to the intercostal muscles of first space. इतना important नहीं है but ठीक है. The costoclavicular ligament is attached to the rough area in front of the groove for subclavian vein. अभी correlate करो. This one is the groove for subclavian vein. उसके आगे होगा costoclavicular ligament. अभी वाला में लो. Draw this one. So what are the muscles? Scalenus medius, scalenus anterior, serratus anterior, subclavius. ठीक है? Subclavius. ये सब भी लिखना है. Fast intercostal. N मतलब nerve, A मतलब artery. ठीक है? Fast intercostal nerve. These are the structures present in the neck region. These are the structures present in the neck region. Fast intercostal nerve, superior intercostal artery, cervico-thoracic ganglion. वैसे लोकेशन देख लो. सबक्लेवियन ग्रुप फॉर सबक्लेवियन आर्टरी के पीछे है साइड में सेरेटस एंटीरियर. पोस्टीरियरली स्केलेनस मीडियस. In between both the groups, this one is the subclavian artery. Sorry, scalenus anterior, and in the anterior portion, that is the subclavius. ठीक है? Thus anterior to the groove for subclavian vein, there is costoclavicular ligament. Now you have to write this. Inferior surface is related to pleura and lung. The scalenus medius is inserted into a large rough area on the superior surface. I have already shown you. ठीक है? Behind the groove for subclavian artery. Behind the groove for subclavian artery. अगर ये वाला ग्रूव है, इसके पीछे वाला पोर्शन यहाँ पर होगा which muscle? Scalenus medius. In between both this groove in the scalene tubercle, that is the scalenus anterior. In the anteriormost portion, that is the subclavius. That is the subclavius. ठीक है? And here there is the muscle serratus anterior. लिखो. Start writing. Inferior surface is related to pleura and lung. You people will be shown all the viscerals, by the way, in dissection very soon. All the viscerals. First of all, we will examine in situ. Do you know what is in situ? As it is जहाँ पर है बॉडी में देखेंगे. उसके बाद then we will explain एक एक organ देखेंगे, heart and all. ठीक है? Inferior surface is related to pleura and lung. अच्छा, first of all, do you have any idea यूट्रस कितना साइज का होता है? कैसा होता है? एक यूट्रस के बीच में बच्चा जो पैदा होता है ड्यूरिंग बर्थ कितना साइज का होता है? लाइक 2.5-3 kg, राइट? इतना तो होता ही होगा. तो यूट्रस कितना होना चाहिए अगर बच्चा इतना हो रहा है ड्यूरिंग डिलीवरी? और यूजुअली एक्चुअली यूट्रस है कितना साइज का? देखेंगे वो भी इफ पॉसिबल. ठीक है? द स्केलेनस मीडियस इज inserted into a large rough area on the superior surface behind the groove for the subclavian artery. ठीक है? The scalenus anterior is inserted on the scalene tubercle and the adjoining part of the upper surface of the rib. ठीक है? The subclavius arises from the
anterior end of upper surface of the rib and from the adjoining part of the fast costal cartilage. ठीक है, लिखो लिखो लिखो, you have to write. ये जो यूट्रस वाला मैंने बताया अभी, ये पढ़ना कि ऐसे क्यों होता है, किताब में होगा. ठीक है, ऑल द मसल्स एंड ऑल एग्जाम पे आता है, पता है एग्जाम पे ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस एंड ऑल. ठीक है, पढ़ना. The fast digitation of serratus anterior arises from the outer border of the rib near the groove for subclavian artery. Near the groove for subclavian artery. दिखाया मैंने. The outer border also gives attachment to intercostal muscles of the fast space. Outer border also gives attachment to intercostal muscles of the fast space. The costoclavicular ligament is attached to the rough area in front of the groove for subclavian vein. Anteriorly जो वाला groove है, that is the groove for subclavian vein. Anteriorly, उसके anterior होगा which ligament? Costoclavicular ligament. Costoclavicular ligament. Obviously ये ligament किसके साथ connect करता है? Clavicle के साथ. Clavicle, right? Costoclavicular ligament is attached to the rough area in front of the groove for the subclavian vein. Right. The inner border gives attachment to the suprapleural membrane. Again, obviously, the inferior surface of the rib is related to, पहले ये बताया, pleura and lung. Pleura and lung. The groove for the subclavian artery. यहाँ पर देखो. The groove, this one is the groove for subclavian artery, right? इसमें क्या है? Along with subclavian artery, there is lower trunk of brachial plexus. Lower trunk of brachial plexus. There are some clinical importance. Whenever these are compressed, obviously अगर नाप compress होगा क्या होगा? Neurological symptoms होगा. Like numbness, loss of sensation, tingling sensations, कुछ भी हो सकता है. Then, if this vessel, that is subclavian artery, is compressed, then there can be vascular symptoms, necrosis and all. That is cell death and all. हो सकता है. Blood supply नहीं हो रहा है. ठीक है, nutrition नहीं मिलेगा. This can be seen in something known as thoracic inlet syndrome. Thoracic inlet syndrome. Thoracic inlet syndrome. I will explain later. लिखो पहले. The groove for subclavian artery lodges this artery. मतलब जो subclavian artery का groove है, वहाँ पर subclavian artery तो है ही. उसके साथ there is another structure. That is lower trunk of brachial plexus. This one is also passing through the groove. Okay. And the subclavian vein कहाँ पर होगा? Obviously, subclavian vein will lie in the groove for subclavian vein. उसका अलग से groove है. इसका मतलब है कि अगर subclavian vein का जो groove है, उसमें सिर्फ subclavian vein ही होगा. There will be only the subclavian vein. But in the groove for subclavian artery, along with the subclavian artery, there is lower trunk of brachial plexus as well. Compression or stretching of this area can lead to neurological or vascular symptoms, which is also known as thoracic inlet syndrome. Structures related to the anterior aspect of neck. कौन सा वाला? These three. These structures, right? Picture में है, but लिखो. Structures related to the anterior aspect of neck of first hip. इस टॉपिक में सिर्फ यही एक टफ क्वेश्चन हो सकता है. टफ नहीं है, बट दे कैन आस्क यू. ये वाला पिक्चर दिखाना था, इसीलिए ये सब इतना बार स्टार्ट करना पड़ रहा है. लिखो. स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक ऑफ फर्स्ट रिब. व्हाट आर दोस? द सिंपैथेटिक ट्रंक, दैट इज द cervico-thoracic ganglion. All these things will be covered in theory. Superior intercostal artery, first posterior intercostal vein, and then comes ventral ramus of first thoracic nerve. ये वाला आपको this portion you have to rectify. ठीक है, you have to mark up this one.
थ्योरी के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। द सिंपैथेटिक ट्रंक, सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, फास्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन and the ventral ramus of fast thoracic nerve. Mind this one, medial to lateral, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जाता है, medial to lateral. Okay, now clinical anatomy. Do we have cervical ribs? हमारे बॉडी में cervical ribs होता है क्या? Do we have cervical ribs? Which one is our cervical area? This one. Do we have any kind of rib there? Do we have cervical ribs? We have cervical vertebra, that is all right. But do we have cervical ribs? Ribs नहीं है. But there is something known as cervical rib as well, which is an defect कह सकते हो या फिर disease कह सकते हो, anomaly कह सकते हो. That is the extension of, that is related to the 7th cervical vertebra. ठीक है, 7th cervical vertebra. देखो, this is the X-ray. Look at this region. Look at other vertebrae. There are no extensions, right? Lateral extensions. But in the 7th vertebra, 7th cervical vertebra, there is some rib-like extensions. Can you see it? ये usually नहीं होता है. This is rare only. Rare of the rarest. बहुत ही rare है. ठीक है? This one is known as cervical rib. Again क्या होता है? If there is cervical rib, it can lead to, again, that it can compress all those veins, arteries. Usually the artery, that is the subclavian artery and the nerve, they can compress all those things, resulting in neurological or vascular symptoms. ठीक है? See, this one is the cervical rib. ठीक है? लिखो. The coastal element of C7 vertebra. C7 मतलब cervical 7, that is 7th cervical vertebra. The coastal element of the 7th cervical vertebra enlarges to form various grades of cervical rib. ठीक है? A fully formed cervical rib is anchored close to anterior end of first rib. Thoracic inlet syndrome I have already explained. What is the thoracic inlet syndrome? Again, subclavian artery and first thoracic nerve arch over the first rib. This may be pressed or stretched by a due to cervical rib only, resulting in vascular and neurological symptoms, also known as thoracic inlet syndrome. What are the neurological symptoms? Loss of sensation or tingling sensation. Usually पहले tingling होता है. कभी भी if you touch a nerve, सबसे पहले tingling जैसा होता है sensation. Thoracic inlet syndrome. Subclavian artery and first thoracic nerve arch over the first rib. This may be pressed or stretched by a cervical rib, resulting in vascular and neurological symptoms. A quick recap then. First of all, this is smallest and the most curved, closer to the anterior, posterior, and this group is for subclavian artery. It contains subclavian artery and which part of brachial plexus? Lower trunk of brachial plexus. Lower trunk of brachial plexus. Then group for subclavian vein. Obviously it has subclavian vein passes over it. Right? In between these two, scalene tubercle. Which muscle is attached there? Scalenus anterior. Just posterior to the group for subclavian artery. There is scalenus, serratus or scalenus? Medius. देखो पिक्चर बनाया है. Scalenus, medius. These two are scalenus. This one is the serratus anterior. ठीक है? And these two structures, thoracic ganglion, superior intercostal artery, and fast intercostal nerve. Inferior surface is related to the
प्लेरा एंड लंग, ठीक है. सर्वाइकल रिब, दिस वन इज extension of 7th cervical coastal margin of coastal element of C7 vertebra. C7 मतलब 7 cervical vertebra, resulting in there can be stretching of cervical. Due to cervical there can be stretching of, यहाँ देखो ना, यहाँ बोले first thoracic nerve or even the brachial plexus as well. Then subclavian artery, resulting in symptoms like वो neurological and vascular symptoms. ठीक है, vascular symptoms में क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई बसल बंद कर दो, that area will die, right? Nutrition नहीं मिलेगा, blood supply नहीं मिलेगा, the bone can die. That is the resulting in gangrene and all. ठीक है, this is known as thoracic inlet syndrome. Thoracic inlet syndrome.